हाँ जी, सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। I know guys, it's a tough day for the Indian cricket team, Indian fans। वो क्या बोलते हैं कि एक पंजाबी में कहावत है कि फौजां जित के अंत नूं हारियां ने, ठीक है ना? आज हमने पूरे टूर्नामेंट में जैसे परफॉर्म किया, सारे फैंस को लग रहा था कि हम लोग चैंपियन बनेंगे, लेकिन पास आके पता नहीं क्या हुआ, कुछ गलतियाँ हुई, उन पे बात की जाएँगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे जीता, उन्होंने क्या किया और क्या इंडिया टीम के अगेंस्ट जाएगा, उन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया को बधाई देना चाहता हूँ वर्ल्ड चैंपियन बनने पे। और दूसरी बात, मैं इंडियन फैन्स को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये चीज़ें होती हैं, हार-जीत लगी रहती है, लेकिन जैसा इंडियन टीम ने परफ़ॉर्म किया और इंडियन टीम ने दिखाया इस टूर्नामेंट में कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बुरे मैच से वो बुरे प्लेयर नहीं बनते, ठीक है? मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ दोनों भाइयों का। कैसे हैं भाई लोग? बस बढ़िया digesting the news, digesting the fact that India is not lifting the cup this year. आई नो, टफ डे गाइस, टफ डे। आप क्या सोचते हैं कि क्या गलत हुआ? किस चीज़ की वजह से इंडिया ट्रॉफ़ी नहीं जीत सका? क्या टॉस फैक्टर था? क्या ड्यू थी? या कोई और चीज़ थी जिसकी वजह से इंडिया नहीं जीत पाया? जहाँ इंडिया की बैटिंग पहली इनिंग में नेगेटिव थी कि जिसकी वजह से इतना अच्छा टारगेट नहीं हम लोग लगा सके? क्या 3 विकेट गिरने के बाद इंडिया शेल में चला गया कि खेल नहीं पाए? क्या केएल राहुल की इनिंग ने ह हर्ट किया? क्या फैक्ट्स हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? आई थिंक सबसे पहले टॉस ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, पर सबसे ब्रेव चीज ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग चूज की। एक वर्ल्ड कप फाइनल में सबको कंडीशंस पता थी। एवरीवन न्यू हाउ द पिच वाज। इट वाजंट as if it came out of the blue. They had this pitch for 2 days in their site. They knew how the pitch was gonna work, how the pitch was dry enough. But Australia said we'll back our strengths. हम बैटिंग बाद में करेंगे, वर्ल्ड कप फाइनल हो ना हो हमको पता है, हमको कंडीशंस के फायदा उठाना है। अगर आपको पता है रोहित शर्मा ने टॉस हारने के बाद भी बोला कि हम पहले ही बैटिंग ही करने वाले थे। तो मुझे हुँ, वहां लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत हिम्मत दिखाई और जो फैसला लिया पैट कमिंस ने पहले बॉलिंग करने का इन अ वर्ल्ड कप फाइनल इन फ्रंट ऑफ 130,000 पीपल। उल्टा भी पड़ सकता है। सोचो अगर 300 रन लग जाते, 350 लग जाते और इनको चेस करते वक्त परेशानी होती, बॉल घूम रही है 100 130,000 लोगों के सामने, उनको बैटिंग करनी होती तो कैसे लगता। पर उन्होंने नहीं किया। हुँ, उन्होंने बैक किया उनकी स्ट्रेंथ को। उन्होंने बोला कि नहीं, कंडीशन का फायदा उठाएंगे और इसको एक हुँ, कोई भी दूसरा गेम की तरह ट्रीट करेंगे, वर्ल्ड कप फाइनल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, और उन्होंने वैसे ही किया। ऑन द हुँ, अदर हैंड इंडिया ने बैटिंग करते वक्त दे वेंट इनटू अ शेल। आई वोंट से हुँ, दे हुँ, बैटेड रॉन्गली, दे बैटेड हुँ, हुँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट हुँ, हुँ, इट वाज जस्ट नॉट इनफ विद द लाइक्स ऑफ हेड मार्श। जिस तरीके से उन्होंने चार्ज किया, आई थिंक वी वर 20 to 30 रन बिलो पार। ओके। प्रशांत भाई, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। मैं असद भाई और बिलाल भाई के बाद में जाता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि अगर टॉस इंडिया जीता तो इंडिया बैटिंग ही करता पहले? हाँ, मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में एक चीज कहा था, ऑस्ट्रेलिया ने कोई तुक्के में डिसीजन नहीं लिया है ये। उनको हाँ, पता था वो हाँ। क्या कर रहे हैं। हाँ आपने जी। जब मैंने आपको बोला था, आपने बोला ये बहुत स्टूपिड डिसीजन है। मैंने आपको क्लियरली बोला था दे नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड जैसे हिमांशु ने कहा, हर टीम अपने अपने स्ट्रेंथ पे स्टिक करती है। जैसे इंडिया का स्ट्रेंथ था बैटिंग, दे वर हुँ, हुँ। स्टिकिंग टू दैट। ऑस्ट्रेलिया न्यू या कि हमारे पास तीन ही बॉलर हैं जो हाँ, सिर्फ एक हाँ। टप्पे पे ही बॉल डालेंगे, उनको और कुछ नहीं आता। जैसे हुँ, जॉश हुँ। हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ये दो मेरे मेन बॉलर हैं जो सिर्फ एक पिच पे बॉलिंग करेंगे। तीसरा मेरा हुँ, हुँ। मेन बॉलर है एडम जाम्पा। जैसे ही विकेट स्लो हो जाएगा
तभी मैं जैम्पा को ले आऊंगा। और हाँ जब हाँ उन्होंने चेजिंग का मतलब आप बोल रहे थे जो स्कोरबोर्ड प्रेशर है, प्रेशर ज्यादातर इंडिया पे ही था। उनको पता था कि हम तो पहले मैच 2 मैच हार गए, हमको वैसे भी किसी ने चांस नहीं दिया, हम यहाँ तक आए, चलो मजे करते हैं। और उन्होंने हम्म ये फाइनल मजे में ही खेला है। आप पूरे हम्म गेम में देखो 3 विकेट भी गिरे, उनमें तो प्रेशर कभी था ही नहीं। वो मजे में ही खेल हम्म रहे थे, वो उनको तो पता था हम्म, ठीक है, आई हैव नथिंग टू लूज हियर। Now या coming to what Himanshu was saying, Indian batsmen did not bat badly. They did not go into a shell. They batted हम्म well. क्योंकि हम्म सिचुएशन डिमांडेड पीपल टू एंकर द इनिंग्स एंड दे एंकर। जैसे केएल राहुल प्लेड वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर्ड इनिंग्स, ठीक है ना, उसको मारने का चांस दिया। अगर आप सूर्य कुमार की बैटिंग भी देखें, उसको मारने का एक बॉल तो दे, एक बॉल तक नहीं दिया उसने। बॉल को और मतलब जॉश हेजलवुड ने और पैट कमिंस ने बॉल और स्लो किया और उसको चैलेंज किया कि बॉल तेरे पास नहीं आने वाला, तू बॉल के पास रिच कर और मार। और बॉल विकेट भी ऐसी थी कि वो मार नहीं पाए, ठीक है। ऑफ कोर्स 30-40 रन इंडिया वर शॉट एंड यू नो हाइंडसाइट इज द बेस्ट गिफ्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव। अभी तो हम बोल सकते हैं 30-40 रन होता तो फर्क पड़ता, बट दो तीन चीज जिससे मैं, जो सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया था, मैंने बोला कि मार्नस लैबुशेन और ट्रेविस हेड, यही दो प्लेयर है जो ये विकेट में सबसे अच्छा करेंगे, और उन्हीं दोनों ने मैच जिताया। क्योंकि ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कंडीशंस बहुत जल्दी एसेस करते हैं और अपना गेम बदल देते हैं। मार्नस लैबुशेन का पूरा वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे तो कोई खास वर्ल्ड कप गया नहीं है, बट वो बोलते हैं ना, जब बिग सिचुएशंस आता है आपके पास स्टीव स्मिथ और मार्नस लैबुशेन दो ऐसे प्लेयर हैं जो अपना गेम कैसे भी बदल सकते हैं। ट्रेविस हेड फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव वाइड बॉल बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट, वो भी एग्रेशन 50-60 रन तक उसने रोक के रखा, वो नहीं मार रहा था। जैसे ही वो 60-70 क्रॉस किया, जब समझ गया चलो ठीक है, अब नाउ आई कैन सी द बॉल लॉट बेटर, देन ही नहीं, लेकिन ओपन। उसके बाद तो उसको पता चल गया था कि भाई अब हारने के चांसेस भी कम है, अजी वो क्योंकि मेच्योरिटी उसको भी की पता। बात होती है ना, वो चाहता था तो हाँ वो ग्लेन मैक्सवेल की तरह पहले बॉल से बैट घुमा सकता था, बट वो हाँ, बैट क्योंकि घुमाया उसको ही नहीं। पता था अगर वहां पर विकेट गिरता ना, एक और विकेट गिरता, अगर 140 130 तक एक और विकेट गिर जाता, तो उसके बाद मैक्सवेल था, ठीक है, जोश इंग्लिश था, पैट पैट कमिंस था, पाजी कुछ भी 40 हो पे सकता टीम था। था, अगर 100 रन के नीचे 4 विकेट नहीं होते थे, इंडिया ये मैच हाँ, कहीं से भी नहीं जीतता था, नहीं, मैं ठीक मैं है। फिर भी ये सोच रहा था कि अगर इंडिया 150 तक भी दो और विकेट निकाल देता ना, 150 फॉर 5 भी होता ना, तो फिर भी चांस थे। नहीं लेकिन पाजी, वो पैट कमिंस इस वर्ल्ड कप में इतने अच्छे अच्छे इनिंग खेला, किसी के नजर में नहीं आया है। पैट कमिंस एक एंड ब्लॉक करके रखता है, वो एक जैसे एक हाँ अगर आप, क्या हम ये कह हाँ सकते जी हैं कि पैट कमिंस, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया वन ओवर इंडिया, इट्स पैट कमिंस वन ओवर रोहित यस शर्मा, यस, सिंपल। हाँ बिकॉज इट्स वेरी फर्स्टली टैक्टिकल कैप्टेंसी टुडे। very हम्म tactical captaincy. Even if you see the bowling changes he ओके, made, मैं firstly he, गाइस मैं आप दोनों की तरफ वापस आता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पड़ोसी लोग, भाई लोग हैं जो, पड़ोसियों से पूछता हूँ, भाई लोग आप क्या सोच रहे हैं आज? आप खुश हैं या दुखी हैं? हमारे दुख में शामिल है या खुश हैं? अरे गुरजीत सबसे सिंह, पहले असद भाई से मैं पूछता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम आपके पड़ोसी हैं और आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। जो आप दिल दुख, पे हाथ रख के बताओ। अरे मेरे दिल, जिगर, गुर्दे, सर सब पे हाथ रख के बता रहा हूँ। नहीं, क्योंकि क्योंकि देखो, यस नोट, अगर आप थ्रू आउट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ले तो जो भी एक जेन्युइन क्रिकेट फैन होगा वो बोलेगा बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया इज द विनर, ठीक है ना। एक बैड डे हाँ आया और वो चीज ना हो सके, लेकिन किससे ही पूछेंगे, जो भी देख रहा है वर्ल्ड कप को, यकीनन वो इंडिया को, और मैं खुद भी इंडिया को चाहता था कि वो जीतें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट द खेला है वो डिजर्व करते जीतना। लेकिन फिर बात वही आती है कि जो आज पता लग गया कि जो बड़ी टीमें होती है ना, उन्हें, जिन्होंने बड़े फाइनल जीते होते हैं, 5 टाइटल जीते होते हैं, उनको एक हैबिट है, उनको एक एक्सपीरियंस है, और वो उसी हम्म उसी माइंडसेट से उन्होंने खेला है। देखा जाए तो इंडिया हम्म के घर में था, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रेशर खुद इंडिया पे असद ही भाई, था। यही तो डर हमने सेमीफाइनल खेलने के बाद जब दिया था ना, कि प्रशांत ने भी यही चीज बोली थी और आप लोगों ने भी, कि अगर साउथ अफ्रीका आ जाता तो हम लोगों को पता था कि हमारे 80% है, 80-20 का था, 80-20 का चांस है। अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो 50-50 हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने शायद हमारा 40 हो गया, ठीक है, और टॉस जीतने के उसका बाद तो वैसे ही आधा मैच और उनका चला गया था। मैं समझता हूँ ये जो है ना, टीम टू टीम नहीं था, ये टैक्टिकल बहुत था। आपके पास स्किल्स हाँ बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर, बैट्समैन सब कुछ है, सब कुछ था, लेकिन आई थिंक ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी ना, वो जो उसने आज डिफरेंस
किया है। ये इंडिविजुअल स्किल्स नहीं थे, ये ओवरऑल जो उनकी प्लानिंग थी ना इस फाइनल को लेके, और वो उन्हें अपनी जो प्लानिंग थी और जो जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उन्हें उस पर पूरा फेथ था कि जो हम करने जा रहे हैं वैसा ही होगा। और आज दिन और उनका भी दिन था और वैसा हुआ। लेकिन हाँ मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम को ये आज के मैच की परफॉर्मेंस से जज करना वुड बी वेरी अनफेयर। ठीक है ना? नो, डेफिनेटली 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 भाई। हाँ, भाई हम उन्होंने प्राउड है अपनी टीम पे, जिन लड़कों ने हमें यहाँ तक लेके आए हैं, हमें हमें खुशियां दी हैं 45 दिन तक। 45 days दे मेक अस हैप्पी। ओके, एक बुरा दिन ये नहीं है कि हम बोल दें कि भाई उन्होंने हमें बहुत दुख किया, ठीक है ना, दुखी नहीं किया। अच्छी क्रिकेट हमें दिखाई उन लोगों ने, और हम लोग प्राउड हैं अपनी टीम पे। लेकिन फिर भी अगर वही कप हमारे पास आता तो वो अलग से खुशी होती, ठीक है ना। वी आर स्टिल प्राउड ऑफ आवर टीम। बिलाल भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया इंडिया के दिन नहीं था आज। आई मीन यू कैंट से मच अदर देन दैट, जस्ट अ बैड डे ऑन द फील्ड। पूरा टूर्नामेंट ऐसा खेले कि दे वर अनबीटन थ्रू आउट अंटिल टुडे। सो क्रिकेट फील्ड में हम सबको पता है कि बुरा दिन आता है सब टीम का। It's one of those games where you could be playing your top game, top level of cricket, and then on the day it doesn't turn out well. I think execution की बात करें तो definitely ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा execute किया, लेकिन I think toss was an important to win today. मेजर फैक्टर। मेजर फैक्टर, एग्जैक्टली, क्योंकि पिच थोड़ी रोहित भी कह रहा था पोस्ट मैच के पिच पहले थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो अंडर द लाइट्स इट डिड हेल्प, बॉल वाज कमिंग ऑन। बट बिलाल लेकिन रोहित ने बोला उसे टॉस से फर्क नहीं पड़ा कि he was okay to bat anyway. no, He but said, he said the pitch was different under the lights. yeah, but then he was Under the lights. happy when he lost the toss. He was happy. He said, I was going to bat anyway. No, but this is post match. After the match when they lost, that's why he said in the post match, under the lights, it was the batting was Yeah, easy. he said he didn't expect the pitch to behave like this, but he said he also added that this is not an excuse at all. He said Yeah, that it was just a very, very, very weird pitch. He could not figure it out. so this I'd say, yeah, it's just a bad day. You can't judge the team. I think this team that you guys have, it's, yeah, I don't know who's going to stay from this team, but this team you have, you should be proud of. I think to go on to win the trophies. Yeah, you could say a few guys, yeah, didn't turn up today. Gale, for example, got out early. Kohli was unlucky. I mean, luck has to be on your side on the day as well. Shreyas as well is another, and then Jadeja. I mean, another 40, 45 runs, 50 would have been the difference, I think, today. But yeah, today you don't want to take the credit away from Travis Head. Itna अच्छा खेला वो, or Marnus, to bring Australia out of that hole that they were in when they were down for the 340 to win the World Cup. I think it speaks highly of them and the character, because they know how to win, and they did again. भाई वो तो हमने पहले दिन ही बात की थी कि उनको पता है कि क्रंच गेम को कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, ठीक है। ये शायद डिफरेंस But मान मेरा सकते हैं, question लेकिन यहाँ पे ये कि ये used pitch का क्या scene है यहाँ पे? I mean, could they have gone with the new pitch today? that's why I could not No, as understand it. per ICC rules, all the games, so you can have a new pitch provided it's a league game or a group game. But for knockout games, you can't use a new laid pitch. You have to have at least played one game in that pitch. You can't change the pitch overnight. You can change it until and unless there is some part of the pitch which is damaged. जो इंडिया न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल में जो हुआ था, एक साइड ऑफ द पिच में जहाँ पे लैंडिंग एरिया था बॉलर का, देयर वाज सम इशू, सो दे जस्ट लेकिन इस चेंज। pitch पे तो 2 मैचेस हुए थे ना, just for the 3 since. मैचेस हुए थे, ये चौथा मैच था। So yeah, I mean, did I don't know, was that a problem? Could they have So gone? after 3 games, they kept this pitch uncovered. It was open. So so a lot of people are saying that since it was uncovered, so slightly some moisture did seep into the pitch. They did roll it out, but it was still tacky. It was very tacky in the first innings. भाई पहली इनिंग में तो वो डबल पेस था। आप 2 बार तो देखो, जैसे एज भी लेके निकली गिल की पहली बॉल, जो रिवर्स आपने पैट कमिंस। स्टार की जब वो आया सेकंड स्पेल के लिए, हाँ। वो रिवर्स हो रही थी गेम उसकी। नहीं, पर हाँ जी। आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि दोनों बॉल दो बॉल होते हैं ना, एक साइड से एक। हेजलवुड का एंड का बॉल जो था ना, वो Zero स्विंग कर रहा seam. था
वो reverse Stark swing. wala end was reverse swinging. No, it's not like that. Oh sorry, the अगर other way. हाँ sorry, second spell. Correct. Hey guys, हेजलवुड मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि वेंकी भैया बोल रहे हैं कि बने आज मैच था। मैंने कहा भाई सबको पता है, अलग से बात है, फिर बोल रहे हैं कि भाई स्माइल कर दो। भाई आपको भी पता है वेंकी भैया कैसे स्माइल कर सकते हैं। गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट। लेकिन आपको पता है कि हंस के कैसे दिखा सकते हैं, ऊपर से हंस सकते हैं लेकिन अंदर से तो आपको भी पता है, आप भी इंडियन हो, आपको भी दुख है, हमें भी दुख है, लेकिन वी आर स्टिल प्राउड ऑन आवर टीम गाइस। सॉरी हमें कंटिन्यूस गाइस। हमें हंसवा लो। नहीं, coming भाई back to Pat Cummins captaincy, Yeah. अगर आप देखिए हेजलवुड के एंड से बॉल जो है ना रिवर्स स्विंग हो रहा था. Hmm. This is what Pat Cummins realized and changed Stark's end, and he got him from Yeah. Hazelwood's end, Correct. and that's when he started. तब जाके उसको इसका राहुल का विकेट मिला. So ऑल्सो उसने स्पेल तोड़ने के लिए ना 2 ओवर ट्रेविस हेड को सडनली बीच में यूज किया, अपना ओवर रेट बढ़ाया, देन अगेन हाँ. गॉट हिज पेसर, गॉट मैक्सवेल अगेन चेंज्ड हिज ओवर रेट, सो ही नेवर लेट इंडियन बैट्समैन हैव अ कंप्लीट सेटल डाउन ऑफ द विकेट. भाई ये मानना पड़ेगा, चेंजेस बहुत क्विक कर रहा था वो, ठीक है, और सडनली चेंज होता था, इंडियन प्लेयर्स को पता ही नहीं चल रहा था कौन बॉलर पे आ रहा है, पेसर आ रहा है, नहीं, स्लोअर आ पता रहा है, नहीं कौन आ चलने रहा का है। बात नहीं था. पैट कमिंस एक स्टेप इंडियन थिंक टैंक से आगे था, वो शायद ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक भी होगी नो डाउट, बट पैट हाँ कमिंस हाँ बहुत मतलब ऐसा लग रहा था ये पिच उसको इंडियन से ज्यादा पता है, उसने पिच सबसे हाँ अच्छा उसी ने रीड किया है, क्योंकि जब उसने हाँ स्पिनर को पैट कमिंस ने मैक्सवेल को खुद के पहले लाया था, ठीक है, और जैसे ही लाया था कमेंटेटर बोल रहे थे ये क्या कर रहा है, स्पिनर इतना जल्दी क्यों ला रहा है, और मैक्सवेल को पहले ओवर में पड़ा थोड़ा, मतलब 6-4 पड़ा, हाँ, और सेकेंड लेकिन ओवर वापस बहुत मैक्सवेल बड़ी आया, विकेट लेके गया वो। लेके गया. तो जब उस टाइम पे हाँ मैंने देखा शेन वॉटसन बोल रहा था पैट कमिंस कुछ सोच के मैक्सवेल से बॉलिंग डलवा रहा है, खुद को रोक रहा है, और वही ओवर में ट्रेविस हेड ने वो जो कपिल देव टाइप कैच था विविन रिचर्ड्स का, उसने हाँ वैसा कैच पकड़ा है. हाँ यार ये नहीं, जब रोहित वो तो ठीक है, पर आप मुझे ये बताएं, जब रोहित शर्मा खेलता है तो पिच ऐसे लगती है कि वो जहां दिल चाहे मारता है, उसके अगर वो कैच ना होती तो ये पिच इधर की ऐसी होती, काली होती, पीली होती, रन आ रहे होते हैं. उसके पास मतलब असद भाई उसके पास एक चीज है जो बाकी बैट्समैन के पास नहीं है, वो है एक्स्ट्रा 1 सेकंड. हाँ। वो 1 नहीं, सेकंड बहुत फर्क पड़ जाता है. पर अगर अगर आप स्टार्ट करते हैं ऊपर से, स्टार्ट करते हैं इंडियन बैटिंग ऊपर से, ठीक है, आप लोग गिल के शॉट पे क्या बोलना चाहते हैं? दोनों, गिल का शॉट और रोहित का शॉट, क्लासिक एग्जांपल ऑफ द पिच पेस. अगर आप देखो Tacky, पुल शॉट आप कहाँ मारते हो, आप मारते हो डीप स्क्वायर पे या फिर उसके थोड़ा सा पीछे. फाइन अगर लेग आप पे, मिड विकेट पे अगर जहाँ पीछे, हाँ पर बॉल गया कहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग ऑन मिड पे, विकेट पे मिड ऑन, नीचे गया था. मिड ऑन के पास गया. ये बताता है नहीं कि वो पिच वो थी. सॉरी मिड ऑन पे, मिड ऑन पे, हाँ हाँ जी, फ्रीज हो गया क्या हिमांशु? हाँ नहीं हाँ, प्रशांत भाई आप कंटिन्यूस करें, बिलाल भाई जहाँ आप लग गए, ठीक है, आप बताएं कि क्या वो गिल का शॉट जो था वो क्या उस टाइम पे रिक्वायर्ड था? क्योंकि मैं सो रहा था उस वक्त. मैंने देखा नहीं यार. गिल का शॉट क्या हुआ, मतलब वो गिल ये शॉट काफी अच्छे से खेलता है, दिस इज हिज गो टू हाँ शॉट, पूरे वर्ल्ड कप में उसको ये शॉट काफी रन दिए हैं, बट आज वो विकेट वैसे थी नहीं. बाय द टाइम ही गॉट इनटू द शॉट ही वाज अ सेकंड लेट, जिसके वजह से क्या हो गया, बॉल वो ना टाइम कर पाया, ना एलिवेशन मिला, ना पावर मिला, इसके वजह से वो कैच हाँ चला गया. मेरे से आप Coming पूछे, back to your point earlier that Pat Cummins have read the pitch really well. Yeah. क्या इंडिया उसमें थोड़ा लैग कर गया? I mean, you know when you go into play and you read the pitch, you say, honestly, okay, in this this shot, throughout, I'm gonna put it away. I'm not gonna yeah, like use throughout the World Cup, right? Pitch never mattered for India. Like they didn't care if it was a slow wicket or a fast wicket. Indians went with a single template. They wanted to play one way of cricket, which is their way. And अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका वाले गेम में या इंग्लैंड वाले गेम में, it was a slow wicket. India said, this is what we are going to do. This is what we are going to play. We don't care. And it worked in India's favor. अगर हम आज ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम हारे हैं, इंडिया हारी है. प्रशांत, सारी बातों की एक बात है, अगर रोहित शर्मा वहां 20 बॉल और खड़ा होता, ये डिफरेंट कॉन्वर्सेशन होती यहाँ पे अभी. 101%. अगर रोहित शर्मा एक ओवर और रुक जाता, एक हाँ, ओवर मतलब 20 बॉल भी नहीं, एक मुझे ओवर. मुझे भी उस टाइम गुस्सा आया जब उसने चौका और छक्का मारा, उसके बाद थर्ड बॉल पे क्या जरूरत थी यार, नहीं रुक जा. That's his game. Like, that's his game. आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, उसका क्रेडिट दे हाँ. दो, लेकिन उसने शॉट सही खेला था, थोड़ा सा हाँ, दूसरी साइड ये भी है, अगर उसी बॉल पर छक्का हो जाता तो हम लोग भी प्रेस करते.
हाँ ठीक है ना। बट और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं रोहित शर्मा को इसलिए आज इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ, नॉकआउट है या जो है वो अपना गेम खेल के चला गया है, ही डिड हिज जॉब हाँ विच इज टू स्कोर हाँ 47 इन 25-30 क्विक फायर बॉल्स। मतलब हाँ आप देखोगे उसने जो चाहिए था टीम को, और वो स्टार्ट की वजह से ही कोहली और केएल राहुल बीच में इतना टाइम ले पाए। अगर वो स्टार्ट नहीं मिलता था ना, ये 240 भी नहीं होते थे, ये उससे और कम हो जाता था स्कोर। हाँ पर वो ज्यादा देर टिकता नहीं, मैं आपको इसीलिए वही बता रहा था। सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, पिच से भी ज्यादा स्लो लगता है आज के पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो मिड ऑन पे आउट हो गया गिल, पुल मारते लेफ्ट साइड में। और अगर आप देखो रोहित शर्मा का जो विकेट मिला है, 2 छक्के, 1 छक्का 1 चौका मारा, ठीक है फाइन। अगर आप उसका फील्ड प्लेसिंग देखो, एक काउ कॉर्नर पे था और एक मिड विकेट, सॉरी नॉट काउ कॉर्नर, मिड विकेट और स्क्वायरिश मिड विकेट, और एक डीप स्क्वायर पे था उनका, तो उसको पता था कि ये वहां पे ही मारने वाला है, पर बॉल आया वेरी स्लो, सो ही हैड टू स्लाइस इट, ही हैड टू वेट फॉर द बॉल एंड ही स्लाइस्ड इट। तब जाके वो पॉइंट के ऊपर से हेड पकड़ पाया। अगर वो बॉल नॉर्मल पिच पे गिरता और फास्ट पिच पे गिरता, वो शायद इसके कनेक्शन पे खत्म हो गया। हाँ, लगता है भाई के इंटरनेट के पैसे हमें देने पड़ेंगे जब मुझे कोई प्रॉफिट आए। मजाक करें, हो सकता है तो मुझे तो जो इंडिया पे लगाए थे उसका मैं क्या करूं। इंडिया पे लगाए भाई वो आपको हम लोग वापस करेंगे इंटरेस्ट के साथ। इसी वजह से इंडिया हारा है आज, असद भाई की ये मेहरबानी है। असद भाई आपने पैसे लगाए इसीलिए वो गए, ठीक है। भाई आप अगर अच्छा, आप मेरा अगर क्वेश्चन है गाइस, हाँ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडिया? क्या थर्सडे से टी20 चालू होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। 5 टी20 है, उसमें 5 ऑस्ट्रेलिया T20 पांचों हार जाएगा और ये बताएगा वर्ल्ड टी20 में हमारे कॉम्बिनेशन बराबर नहीं है। जब वर्ल्ड टी20 आएगा वो भी जीत के चले जाएंगे। फिर जीत जाएंगे। इज देयर यही उनका न्यूज़? उनका यही रहता है। वो 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 हारते हैं ऐसे जो गेम होती लेकिन है, फिर क्रंच पाकिस्तान गेम की आता है, तरह आप क्रंच नहीं गेम में सैक फिर कर रहे ट्रॉफी रोहित लेके को निकल ना, जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरह आप रोहित को ना सैक कर रहे हैं ना। नहीं, रोहित सैक नहीं होएगा। नहीं, रोहित सैक नहीं हो रहा, लेकिन बट जब 2020 रोहित के लिए कैप्टन बना कैप्टन, था, ये 2020 बहुत के लिए क्लियर था कि ये, हार्दिक पांड्या कैप्टन है ना। हाँ टी20 का हार्दिक पांड्या कैप्टन, जब हार्दिक रोहित पांड्या कैप्टन कैप्टन बना है। था ये काफी क्लियर था कि इट्स अ 7 to 8 ईयर I think प्रोजेक्ट। Pandya is not fit for this 2020. ओडीआई सीरीज, So सो इट विल he's प्रोबेबली going बी, to play South Africa series, not this हाँ। one. सो Yeah, पांड्या नहीं है कैप्टन तो मोस्टली केएल राहुल कैप्टन करेगा, बट उसने अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं की है, तो I श्रेयस think अय्यर KL या Rahul is ऋतुराज not going to गायकवाड़। be captain. Probably Jasprit Bumrah is resting as well. Sorry, या he's going ये to South टी20 Africa, सीरीज है, so he's ओडीआई resting as well. So the big टी20 players, they're सीरीज going है, to be rest ओडीआई। after Thursday series. हाँ जी, हार्ट ब्रेक और एंगर में फर्क है, और ये जो आपको दिख रहा है इंडियन फैंस में, दैट इज हार्ट ब्रेक। He's तो invisible now. ये ऑफ कोर्स, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर सैक होगा या फिर कोई भी Can say. कैप्टन सैक होगा। हिमांशु भाई अब वापस आ गए आप। ऐसा लग रहा था वो जैसे वो क्या था कि आप वो कौन वाज सी वाली थी अनिल कपूर की मूवी, ठीक है, मिस्टर इंडिया। Mr. मिस्टर India, हाँ। इंडिया। आप गैप थे, चेयर जरूरी पे ना नहीं उसके थे, पास। बोल रहे थे लेकिन चेयर पे नहीं थे। मुझे लगा वो उसकी तरह वो हेजलवुड का बॉल जो था ना, जो जिसपे सूर्य कुमार आउट हुआ, वैसे तो नहीं बॉल लग रहा पहुंचा था। ही नहीं उसके तक, 2 बॉल बार नहीं पहुंचा ही पहुंचा बॉल। नहीं। यार अरे उन लोगों ने इतना स्लो डाला, मुझे लग रहा था कि वो जैसे ना बोलते हैं ना कि अंडर आर्म डालने वाली बात थी। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा यार, उन्होंने सूर्या को फंसाया है ना, दैट वाज एडमायरेबल। लाइक सूर्या 101%। मतलब वो के- इसलिए, मतलब आशीष भाई सूर्या इसलिए को हिमांशु ने बोला ना कि इट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया विनिंग ओवर इंडिया, इट इज पैट कमिंस, इट इज द ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। या उनका होमवर्क थिंक टैंक अच्छा, डेफिनेटली। स्काई के ऊपर उनका होमवर्क कितना अच्छा था। स्काई के ऊपर लाइक स्काई 360 प्लेयर है, उसे आप कहीं भी बॉल डालो वो आपको मारेगा। लेकिन यार आउटस्टैंडिंग वर्क किया हुआ था उसको, उसे बिल्कुल फंसा के रखा हुआ था कि पल्ले नहीं पड़ रही थी। मतलब दैट्स नॉट स्काई प्ले, दैट्स नॉट। I think he got fed up as well. He got fed up. जो शॉट मारा था ना कि स्पेस ही नहीं थी उसके पास। मतलब बिलाल भाई आप सोचो ना, मैं नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हूँ, बॉल मेरे तक पहुंच ही नहीं रही, मैं कितने टाइम खड़ा रहूं वहां पे। नहीं, but उसने that's- एंड में तो कुलदीप को सिंगल दे दिया, बोला भाई तू खेल, तेरे तक तो बॉल पहुंच रही है, तू मेरे बदले He मार। did that multiple वो times. मार भी रहा था, उसने उसने एक ना दो मार सिंगल भी पे लिए। कुलदीप को दे दिया कि तू भाई खेल, मैं बाद में खेलूंगा।
But that is हाँ disappointing. You see, he's a Yeah. player, he's an Indian team player who's been seasoned very well in different conditions. अगर ball, he knows that what they are trying to do. ऐसा नहीं कि एक ball आया, he was surprised. No, three Yeah. balls, slower balls. So he should have waited, patience. Next over में शायद वो ऊपर मार देता, कुछ दूसरा सोचता. But I the I same. I think स्काई को टाइम नहीं मिला वर्ल्ड कप के अंदर पे इतना फील्ड में अब बैटिंग करने का. दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन. ही डिडंट हैव मच टाइम टू स्पेंड ऑन द पिच टू प्ले. और इतनी वो हाई तो वो प्रेशर एक सिचुएशन. दो मैच को छोड़ के टेस्ट हुआ ही नहीं भाई, हमारा लोअर ऑर्डर भी टेस्ट नहीं हुआ. आई थिंक ठीक है. मेरे लिए, और मतलब दूसरा सॉरी टू आपने इंटरप्ट, बट स्काई का आज नंबर चेंज भी किया. आपने स्काई के कॉन्टेस्ट को शैटर किया, आपने उसका नंबर चेंज किया, उस पर वैसे ही प्रेशर बिल्डअप हो गया था. नहीं, बट मैं आपको बोलूं, आज के पूरे बैटिंग में मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड था श्रेयस अय्यर से. मुझे ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा रुक के खेल सकता था, बट ठीक है, बॉल वाज आल्सो लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम टू अवॉइड. ही गॉट आउट टू अ पीच ऑफ अ डिलीवरी. भाई वहां पर बॉल भी थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हो रहा था. ठीक है. नहीं, मतलब और आप Come on, कीपर man. के पास इतना निक जल्दी देते श्रेयस हो. इतना श्रेयस जल्दी अय्यर, रिवर्स स्विंग हो रहा है. नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, I agree with प्रशांत. If you see जो बॉल, अगर पिच में आप देखोगे जहां पे पड़ा है बॉल, बॉल लेंथ पे नहीं पड़ा है, शॉर्ट गिरा है. और हाँ, शॉर्ट के बाद भी वो उसको, आई नो कि वो फंस गया, बॉल स्लो रह गया. इतना नहीं ही उसका डेविएशन हुआ था. ही जस्ट प्लेड अंडर इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल. या एंड जो बंदा बैक टू बैक सेंचुरीज मार के आया है, आई थिंक इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि ही इज प्लेइंग इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल. और वो भी ऐसा भी नहीं है कि वो आगे था बॉल, आराम से द शॉट गिरा हुआ है बॉल. ही और कुड हैव. मतलब वो उसके स्ट्रेंथ वाले एरिया में बॉल गिरा है, ऐसा भी नहीं. अगर आप शॉर्ट पिच बॉल देते हो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, पेपर हो गया, एज कर दिया शॉर्ट बॉल, मतलब उसके रडार वाला बॉल था ये. ही कुड हैव डिफेंडेड इट But वेल. this is not just Shreyas Iyer. This is the story of all the players. करेक्ट. They were jittery, very. Even if you see when we started bowling, the first ball that Bumrah bowled, Virat Kohli जैसा player left side में slip, he just left it. हाँ, Uh, Gill was standing the gap between the first slip and the second slip. A team of India's caliber ऐसा इतना gap छोड़ेगा. They know the pitch, they know the pace. They need to cover that base, right? They just left it. अगर आप शमी को, I'll come to that. That is the point of discussion. Giving first over, the second over to Shami, I think it was a bad choice because first या of all, आई you're थॉट दे get, विल कंटिन्यू विद सिराज. yeah, ही इज या यूजलेस विदाउट द न्यू you बॉल. exactly, you are firstly bound with only 5 bowlers. If you don't give Siraj the overs in the first 10, that means you're playing with 4 bowlers. So because उसका skill जो है सिराज का, it's with the new ball. शमी का skill जो है, it is with the second is the first change, चौथे ओवर का बॉल, फिर पांचवें ओवर का बॉल. That's what. तो he is not able to control the swing. और अगर आप शामी से देखो उसने, आपको मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, शामी से कंट्रोल भी नहीं हुआ. उसने वही तो 5 मैं वाइड्स बता दिए, रहा हूँ. उसने कपल क्योंकि ऑफ आदत वाइड्स नहीं है डाली. ना, क्योंकि फर्स्ट आदत नहीं है न्यू बॉल सेकंड डालने का. फर्स्ट ओवर डालना और फोर्थ ओवर हाँ डालना, उसमें फर्क है. बॉल चेंजेस ड्रास्टिकली एंड स्पेशली ऑन दिस पिच. अगर आप उसका फर्स्ट बॉल देखोगे, हाँ उसने वार्नर का विकेट लिया, पर वो कौन सा बॉल था? वो वार्नर की गलती थी. वो वार्नर की उसका, गलती, वार्नर ने बाहर बट निकल क्योंकि के वार्नर वाइड बॉल ऑलरेडी को पहले जाके वाले खेला. ओवर में प्रेशर में आ गया था, क्योंकि दूसरे साइड That, पे बैट्समैन वेंट नट्स, तो I उसको भी can लगा see हाँ अब मैं why भी मारूंगा Rohit. इसको. I can see why हाँ Rohit went with Shami as well. Like he's your leading wicket taker as well. So if you want wickets, you give it to your best bowler, which was Yeah, but yeah, Shami. but it's he like saying, so imagine it's like giving this guy, what do you call, Harris Roth, the new ball when he's not even bowling no, with line and even leg. is No, you giving don't give a him. Harris hasn't Kuldeep been Yadav to performing. new ball. The It's question not about the was wickets. Shami was your It's about wicket the when he taker. got a No, no, wickets. no, no, no. But you also have to realize what is the bowler's strength. That's what Himanshu is trying to tell I you, know, right? but you don't want to leave it too late. I get why he brought him in. You I want think to it was, it didn't look, work out for him. लेकिन yeah, but बिलाल why भाई वो would जो you पॉइंट make बता रहे one हैं ना, bowler मुझसे redundant? स्विंग नहीं कंट्रोल हो रही थी. I know, आपको ठीक है. पता है लेकिन सिराज हाँ, ये उसने पूरे ट्राई वर्ल्ड किया. कप में ना, मतलब मैं to कह cut रहा the हूँ, मैंने ये discussion, नहीं कहा कि रोहित का डिसीजन ठीक था. मैंने कहा I can see why he brought him on, लेकिन it didn't work out for him. no, लेकिन but if you think But it's about it, if you think but about guys, it, it's the why thing is that Siraj is playing in this lineup is only two reasons. One, he's extremely expensive with the new ball, but he gives you that crucial wicket. that's बिकॉज true, न्यू that's बॉल true. सिराज कंट्रोल बहुत अच्छा करता है. और सिराज का क्या है कि 4 अच्छी बॉल डालेगा, पांचवा भले ही वो चौका खाए या छक्का खाए, बट वो विकेट लेगा. अगर आप सिराज को न्यू बॉल नहीं देते हो ना, वो आप एक बॉलर वेस्ट कर देते हो, क्योंकि वो और exactly, no, I completely agree with you, Prashant. If you realize what Siraj did in Wankhede last time when they were playing under lights, they were bowling under lights, Sri Lanka dismantled completely, 50 all out, या and he's that kind of bowler who hits line length swing. देखो swing
1 किलोमीटर का स्विंग नहीं चाहिए, हमको बस चाहिए 2 इंच का स्विंग। वो दैट इज इट। कितना स्विंग करते हैं उससे, इनफैक्ट यू विल नॉट गेट द विकेट इफ यू स्विंगिंग मोर देन 1 फीट। Yeah. यू जस्ट नीड टू ये- स्विंग Yeah, so यही स्लाइट। चीज तो शामी के साथ जस्ट शुरू से नहीं हो रही नहीं, है, बहुत बट लंबे टाइम से। मैं वही पॉइंट बिलाल को वही समझाने की कोशिश मैं यही आपको मैं हैरिस रॉफ के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा था। अगर मैं उसकी एबिलिटी देखूं, उसका एबिलिटी है कि रन रोकना और बैट्समैन को डराना उसके पेस से, विकेट कोई और साइड में ले लेगा। सिराज हमारी टीम में वही काम करता था। एक एंड पे बुमराह जब प्रेशर बनाते रहता था, सिराज और शमी आके विकेट लेके चले जाते थे। आज क्या हो गया, रोहित शर्मा ने changed his tactics because like you rightly said he needed wickets, but what he forgot was there is one guy in your armory which is Jasprit Bumrah who conceded 15 runs in 1 over, but he फर्स्ट came back ओवर, and bowled a maiden first over 15 runs. He came नॉट back द 1 bowled, ओवर, फर्स्ट ओवर। yeah, first over bowled a 15 runs over, came back bowled a maiden, took a wicket and started building the pressure. I still thought कि this is the time go to Siraj, they will go after Siraj क्योंकि उनको रन चाहिए। सिराज को मारने के चक्कर में विकेट चले जाते हैं, Plus, हमेशा यही होता है। with Shami, I can see, and another reason is that because the run's leaking, I can see Shami, like he's been good with his economy as well. So if you brought him on, you want to contain runs, plus he might give you a wicket, which he Yeah, did. but that's because you only look stats at one part, right? He gets wickets because there is other guy who's bowling with Yeah. tremendous pressure at the batsman, which is And- Bumrah or Jadeja or Kuldeep. They don't let और him बुमराह let के him पहले escape. ओवर में 15 रन गए, पहले ओवर में 15 रन चले गए, उसके बाद उसका यार स्पेल देखो। गुरजीत पहले नहीं एक सेकंड, पहले ओवर पे जरा आप ये बात सुनिए, जब आपकी टीम ग्राउंड में वॉक करी है 240 का टारगेट देने के बाद, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज उस लेवल की नहीं थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि जब पहली बॉल जब एज होके स्लिप पे गई, ना विराट ने अटेम्प्ट किया और ना ही गिल ने अटेम्प्ट किया, Yeah. तो बॉल को देखते रहे, एंड दैट क्लियरली शोज के देयर इज स्टिल इन द माइंड। Switched off थे आज तो। हाँ, जिटरी था, जिटरी थे वो लोग। वो क्या चीज रिफ्लेक्ट हुई कि व्हेन दे वॉक्ड इन दे समहाउ हैव सम डाउट्स, या डिड वी पोस्ट इनफ टोटल ऑन द बोर्ड, वरना विराट कोहली जैसा कैलिबर वाला प्लेयर इफ ही डजंट गो आफ्टर द बॉल इट जस्ट सरप्राइज मी, यू नो ही डिडंट। और एक बात है ना, मतलब जो मैं इस पे ऐड करूंगा, अगर आप ऑस्ट्रेलियंस की विकेट कीपिंग या फिर फील्डिंग पोजीशंस देखोगे ना, जैसी विकेट स्लो हो गया ना, सब 2-2 फीट अंदर आए, मतलब दे वॉक्ड इन 2 yards बिकॉज दे रियलाइज बॉल पीछे तक आने ही नहीं वाली। जैसे मैक्सवेल जब स्पिन कर रहा था, स्लिप बहुत नजदीक था, मतलब मुझे याद है एरन फिंच ने कमेंट्री में एक स्पॉट किया था, बोले ये फर्स्ट स्लिप इतना नजदीक क्यों आया है। तब मुझे याद है एक चीज और आप देखोगे कि देखो हम लोग विकेट से जीत सकते थे मैच, हम लोग ओवर खिला के डिफेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन समझ नहीं लगी कि कुलदीप यादव और जब अपना जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, स्लिप कहाँ थी। स्लिप की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बॉल घूमना बंद हो गया था, बॉल सीधे भाई सीधे बॉल बैट पे आ घूमना रही नहीं, थी। आपने फिर भी नोटिस किया होगा 2 बार एज ला के निकला। आप जो वो एज की जो बात कर रहे थे, वो एक्चुअली मारने वाले बॉल थे जो बैट के एज पे लगे, वो अगर बैट पे प्रॉपर पड़ती थी तो चौका ही था। हाँ ठीक है, लेकिन आपने विकेट निकालने हैं, आप प्रेशर डालोगे किसी तरह बैट्समैन फिर ही फॉल्स शॉट मारेगा ना। बट क्योंकि आप सिंगल दे रहे थे तो वो लोग ने सिंगल रोकने के लिए सब फील्डर कवर पॉइंट मिड ऑन पे रखे थे, तो इनका एक ही रिलीज शॉट था कि कवर के ऊपर मारो, और वो वही मारने गए जो जाता भी था। अगर विकेट बॉल बैट पे और अच्छे से आती तो कवर के ऊपर 4 जाता था, बट विकेट इतनी मतलब स्लो थी और टैकी थी, वो एज से चौका चला गया। बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि रोहित शर्मा का एक डिसीजन जो मैं करूंगा, रोहित शर्मा का एक डिसीजन जो आज बहुत गलत हुआ है, यू डोंट ब्रिंग इन जडेजा बिफोर सिराज। The ball was still hard. He still brought on Jadeja before Siraj. और मैं देख रहा था, मैं बोला यार नहीं होने वाला स्पिन, जडेजा is today is not our best bowler. Might as well still bring He's Siraj. seen a 1 over, but he's seen the 1 or 2 balls got a break, ठीक है, रुकी है बॉल, शायद उसको वही डाउट हो गया कि उसके बाद उसके साथ ही कंटिन्यूस किया उसने। Again, I think that's what I said. रोहित शर्मा की कैप्टनसी क्या हुआ है ना कि he has gone with stats. Jadeja is good with Australian batters. He gets the Especially better against of them. Marnus. So get Jadeja on. Shami is a wicket taker, so get Shami on. Siraj leaks runs, so hold back Siraj. But he should have stuck with what he has done for the last 10 matches. If he stuck with, maybe he would have. What if Siraj bowled second over and 2 in his first over? 2 or 3 wickets. That's it. Yeah, that's it. Like that's all you need. Even if you remember, Himanshi, if you remember South Africa match, right? When Quinton de Kock was trying to hit, it was Siraj who contained Bauma, and Bauma started going for runs and he gave his wicket away.
तो हम्म, सिराज विल डू दैट टू यू, ही विल गिव यू दैट वन विकेट, वो मेन विकेट ही लेके जाता है हमेशा। बट ठीक है, वन ऑफ दोस डेज व्हिच नथिंग वर्क फॉर इंडिया टुडे, मतलब कुछ भी Yeah, नहीं वर्क किया। I think this is the summary. This is honestly the summary. Ke they did try a few things, but unfortunately, if it's not your day, it's not your day. Yeah. But that's हम्म, exactly what happened. And at the same time, you have to give the credit the way Australian planned the whole thing and everything they were doing. It shows that they have a proper plan in place for everything. They have a counter attack, and that was Also, very हम्म, evident. And when they walk into the field, they were so desperate, and you can see their desperation on the field, how they were saving the runs, how they were running after the ball. That was a massive difference. I think जो 20-30 runs का difference है ना, I think this फील्डिंग is में the major difference, the fielding में। मतलब जो हमारी पहली बॉल जो विराट ने अटेम्प्ट नहीं की, और वहां पे उनकी पहली बॉल जो जिस तरह से ट्रैविस हेड बॉल पे जाके गिरा, और लाइक दैट वाज अ मेजर डिफरेंस I think they टैक्टिकल saved. और Asad bhai, I'm agree with you. They saved minimum 30 to 40 runs in the fielding, असद and भाई we के gave पॉइंट away. में ना एक और चीज मैं ऐड करूंगा। ये वर्ल्ड कप से ना मेरे लिए 3 सीख हैं। पहला सबसे बड़ा सीख मेरे लिए पूरे वर्ल्ड कप में यह है, अगर आप टेक्निकली साउंड बैट्समैन हो इन एन एरा ऑफ T20 50 ओवर ऑल्सो, अगर आप टेस्ट मैच खेलने की क्षमता रखते हो तो आप ओडीआई अच्छे से खेलोगे। फॉर एग्जाम्पल खेलोगे। मार्नस लैबुशेन, ट्रेविस हेड, इनको टेस्ट बैट्समैन में गिना जाता था, ठीक है, और दोनों ने अच्छा खेला। डिफिकल्ट विकेट में ये दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। इसमें दूसरा, लकी हाँ ए, मतलब एक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू क्रॉस, एंड आई थिंक दिस इज वेयर इंडिया फेल्ट शॉर्ट आल्सो इन द फर्स्ट इनिंग्स। 10th ओवर से लेके 40th ओवर तक सिर्फ 2 बाउंड्रीज। हाँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लाइक अगर आप मतलब भाई 10th इंडिया और के 40 से आप 2 बाउंड्री बोल रहे हैं, 10 से 30 तक कोई बाउंड्री नहीं है। I was इमेजिन। about to say that comment I that think I was Rahul a little bit too pessimistic in that. no, no they I blocked him, man. They just No, blocked the shit out but of I him, mean, come on, he scored e- e- 66 either or they were something. bowling tremendously well or we were which in they a did. shell. Which they did. So India, they, I honestly don't think India went to a shell. They cut out Rahul's all strength areas. Even the boundary he scored, it is a shot which he does not play, which is the paddle sweep. They but blocked still, all his length. but tell me one But you thing. have to think outside sometimes. If you no know I Exactly, you're like being blocked, you guys make I a agree. mistake as well. I But think I you agree. have to understand it was a high pressure game. The yeah, stake was very high, so like before you offer any shot, you are thinking millions time in your head. Stake is very high. You are playing jam pack over 120,000 people in the ground, and Australia has nothing to lose yeah, because that's what I said, right? They came without a fear, and Indians had yeah, too much on their head. मैं out हो जाऊंगा तो क्या सोचूंगा? Even if you exactly. remember the last run out, last ball का run out देखो आप, the player just हाँ gave up, and I was like, See, भाई तू भागना भी छोड़ यार, दिया तू। वही 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 सिराज ने उसको बोला, बोलता मैंने 2 कंप्लीट कर लिए, तू क्या कर रहा है? वो तो सी that's what you expect from Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav का कोई इंटेंट नहीं है बैटिंग का. He just comes rocks to the stadium saying मेरे को बॉलिंग करनी है. He doesn't want to bat. That's his attitude. हाँ, And even though he's a better batter than most of them, most of Shami, the taillaters, Shami, yeah, yeah. हाँ, definitely. Yeah, But the thing, 101%. but Kuldeep has got a double century in domestic. He was actually middling the ball that he was he's blocking. a Yeah, he's a he's got very a good batter. domestic double century against हाँ, in Kanpur, which is वो one of the 200 fastest मारने wickets वाला in India. डोमेस्टिक में यहाँ पर दूसरा रन ले ही नहीं रहा, आराम से वापस वॉक करके जा रहा, रन आउट हो No, गया। no, but just to put that into context, 30 overs, right? So 180 balls, you only scored boundary of two of them. You, 180 ball, 62 runs, by the way. That's what India did. Only no, one third of the runs. yeah, I don't, but just the boundaries, two boundaries out of 180. Like, I understand high pressure situation, I understand 130,000, but it is your crowd. You're batting first. You are Exactly. setting the But total. but but Lekin- I suppose lekin- lekin, when Rahul was batting, and he was just trying to hold the wickets from one hand, and he was hoping when Jaddu and Sky come in later down the order, even if he gave them 10 overs, they will post 60, 70 runs, and this will be a big help. So I think that sort of mind frame they were in. They weren't going for everything because they haven't got much chances because we already lost top three. So they have someone will have to stay there and anchor the inning till all the way till 40th. But but that's the thing. So that's what I think that let India down is. I will leave it to you. I am not there. You do it. I will Yeah. just get it to 40. yeah. You do it. The other Exactly. person said you do it. The other person said you do it. And that's how it came to Kuldeep Yadav and Siraj. Yeah, Exactly. That's the you story. could still rotate. I mean,
looking at the strike rate and that, I mean, you could still rotate. Yes, you want to block, but you could still be a little bit Yeah, I think more optimistic. I think that's right as well. But India lost a crucial wickets on the critical times. Like the, I think Kohli's wicket. Kohli was unlucky. After That was that, unlucky. That was unlucky. yeah, man, Kohli was like a stunned. He just stood and looked at मुझे the कोहली whole के stadium. विकेट What में ना happened? मुझे वो रिजवान का बोल्ड याद आया. It was a very हाँ, unlucky ball, great ball, but Rizwan was just unlucky to get that peach of a ball. कोहली के टाइम पे yeah, बॉल भी घटिया था, उसने डिफेंड भी अच्छा किया, बट वो जस्ट रह गया पिच में और बोल्ड हो गया. yeah. नहीं, He but just just looked around like what वो happened. कोहली जो ये बॉल ना थर्ड मैन की तरफ गाइड करता है, और तब हाँ. वो तब भी वही करना चाहता है, लेकिन वो इनसाइड एज हो गया. no, but I'll come to Bilal's point, okay, regarding running, right? This is a ground where the shortest boundary that you have is around 63 meters, which was on the leg side or one of the sides. 70 meters or achhi khasi. Ahmedabad is no 1K day. It is good Yeah, boundary. How many singles were actually converted into doubles, or hardly. how many doubles were converted into, or how many close singles were actually taken? I think that's where we, and especially I'm not talking about Kuldeep or Siraj. Okay, I don't expect when your best batters like or running between the wicket guys like KL Rahul and I think they should have shown more intent. It's a big ground. Drop it into the pockets. If you're not getting any four, that's fine. But at least run your twos. At least run your ones. I think they've. But Himanshu that totally understand. But you have to understand, like we lost wickets on the crucial points. But I ठीक है think ना? what happened there, Gurjeet Paji, I think what happened, so like Rohit was saying, our plan was to get somewhere around 280 when Kohli and Rahul were playing. Yeah. 280. Yeah. I think when Kohli and other wickets started dropping, KL Rahul went to a different target. He said, now I need to just survive. I need to get somewhere to a total that we could play. And then he started doing just surviving on one end and expecting, as he said, others to score, which I think as a player of your caliber, I think you should have taken a little bit of intent, rotate strike, and there will be bad balls and to put them away. But the problem is Bilal, who Bowling 6 balls on the Bilal, dot, Bilal, on the Bilal, point. but Bilal, if you are KL Rahul, like what's going in your head? Like who do you have left after you? No, you have to trust them. Jadeja, Surya Kumar, they can play. But they They haven't had exposure throughout the tournament. And But you they expose, changed the batting lineup after losing a Kohli's wicket. They sent Jadeja ahead That of I the think was a Surya. blunder They should have again. trust more him. I You in know, hindsight again, best guess mankind has, but I think that was a wrong decision again. Yeah, What does shouldn't that have do yeah. to changed. Yeah. They should what have does trust. the They should have trusted the number 6 batsman. He's the Is best it batsman for that they them. went to the left He and can right hit a couple to of mess fours up and the could be line change the line? game. Yeah, they man, went with the left and right, but what Rohit Sharma didn't realize was there stop. was one end ball was swinging like crazy, and he Yeah, threw Jadeja in the deep end. Yeah, the wicket was there to take, and वो Mitch Stark भी ना, मतलब और Josh Hazelwood और Mitch Stark, they were setting Jadeja up, and हुआ क्या, 20-25 बॉलें भी खिलाई उसको और विकेट भी ले गए. we could Hmm, be. Or hmm. it's added more pressure for the Surya Kumar Yadav. Hmm. You know, And what does that do to your number Surya Kumar Yadav's confidence when you send someone else? Surya Kumar Yadav has done almost got of his half century. He has scored quickly in couple of matches. So what does that tell Surya Kumar? Okay, now is Jadeja going on top of me? It kind of beats his It confidence does, as it well. does. yeah, Like it does. Like that's we right. did That's right. it as well. And when you start switching around, you do kind of think. I mean, yes, as a professional, probably they don't And as much as and us hitting, this amateurs. They guy can. is a I proper. think they do. I think what happened was, I think he just when he saw the ball wasn't coming on the bat, he just kind of he wasn't confident enough to take his time. I mean, he still had plenty of balls left. If Yeah, he but had middled a few, then I'm sure he could have taken the game to yeah, 280. Yeah, like but if you see Surya Kumar sorry. Yadav is a good player. He sweeps the ball. He would have put Zampa under pressure. He would have put Maxwell under pressure. He got only Yeah, 2 overs from the spinners, which he swept. He did not get a boundary, but as soon as he came in, he started sweeping. What happens with the sweep is he can access the leg side, so the field placement changes, and that one ball on the off stump, he square cutted. If you see, neither does Kohli play a sweep. Hmm. Rahul sometimes plays a sweep, but he's not that fluent player, Yeah. and that's a weakness. You are basically leaving the 45 degrees on your left side.
in fact, there was one comment, I don't remember who it is. He said, "You actually don't require a 45 for them. You can get the 45 Shane to cover Watson. us." That was Shane Shane, Watson who said, yeah, there's which no is actually sleep. true. You know what lines to bowl, and Yeah. you can place an extra fielder there, and that's what exactly happened. I don't know if I how many of you watch IPL. Whenever KL Rahul comes to bat, right? So I support Chennai Super Kings, CSK. What Mahendra Singh Dhoni does is he does not have a square leg. He does not have anyone in the fine leg. He basically asks Rahul, मतलब जितना sweep मारना है मार ले, and he bowls the ball exactly in the angle of sweep. And every time Rahul tries to go for the sweep, he gets bowled or LB or skies it up. But Rahul at this, like, this is a question for yourself if you watch Yeah. IPL, and Rahul at that place at number 5, where Yeah. you expect in the game where you're sort of like, if you're in a good day when you're batting really well, you're expecting the game to somebody to play probably at strike rate 150 and plus to take the game and score at a good target. But See, at the that best place, thing is it about good KL enough Rahul to is, right, KL Rahul is a play? classy batsman. Yeah. So if you ask me, do you think he fits at number 5? I think no, but he's done the job for the team. Whenever this Yeah. team has been in a mess, he's pulled the team out of a mess. But Whenever the the team required reason to was that he score was playing quickly, number 5. yeah, whenever you Like in require case the we team to lose, score quickly, KL Rahul does it. yeah. KL Rahul is a beautiful player against pace. But I The think, like, looking And at few more often he was Shreyas, playing a number 5. Reason is that because in case we lost 2 3 quick wickets on the top, he's there. no, He but can don't you anchor the think inning. He Shreyas, can play as like it best slowly. he is with the pull shot and all that, he would have been better at 5 and KL Rahul at 4. who? Shreyas Iyer. Shreyas Iyer at 5. No, India's best murderer of spin is Shreyas Iyer. You don't play spinners against Shreyas Iyer. He will kill you because he plays spinners as one of the best players in world cricket, like Henrik Klaasen. His go-to shot against spinner is walking down and hitting for a 6, and his sixes are huge. Okay, so India figured out a role for KL Rahul, and it worked brilliantly till this World Cup. And in fact, even today, I thought he played a very matured knock. The only problem with that whole knock was he did not convert a lot of singles into doubles. Prashant, He was, I think that's all. He's a good player, no doubt about it. But the intent has to be there. You have to take a bit yeah, of. the intent was clearly missing. And, I'll give credit to Australia for that also because they cut everything what he is good at. They did not bowl him any good length ball. They did not let him drive. No, but Prashant, if a pitch is small, slow, what does a batter do? And what has India done in the past in slow pitches? They come in, they take steps, they come down the wicket Yeah, and yeah. try He and did hit not it. do that. Rohit does that How as many well, yeah. people, except for Rohit, who did it? I think once KL Rahul did it, but he missed the turn of Zampa. Josh Inglis collected it. वो जो stumping का appeal था. After that, वो step out करना बंद ही कर दिया because he No, but suddenly what got about scared. fast bowlers? What about fast bowlers? I know Kohli was doing to a certain extent, इसीलिए मिचेल मार्श को उन्होंने कीपर ऊपर बुला लिया था. हाँ. But apart from that, I did not see KL Rahul coming, stepping in front. अच्छा चलो बॉल मेरे पास नहीं आ रहा, मैं बॉल के पास जाता हूँ. इंडिया, I think, was very jittery, Very डरी defensive हुई थी. actually, which is not very नहीं, India-like. not India was very defensive. defensive. बहुत even Asad said that fielding में वो उनका मुझे लगता है वो बहुत पहले से था. Even except for Rohit, all others were showing jitters. बैटिंग स्टार्टिंग से ही इवन कोहली फॉर दैट मैटर आई थॉट ही प्लेड वेरी डिफेंसिवली. ये जो बॉल था ही कुड हैव प्लेड स्ट्रेट और मे बी अगर वो मैं अब बोल रहा हूँ कि अनलकी था. आई डोंट थिंक ही वाज अनलकी. इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड डिसमिसल एंड ही दे वांटेड कोहली टू गेट दैट बैट एट अ 45 डिग्री एंड उन्होंने अगर देखा होगा उन्होंने वहां पे मतलब if you remember, I don't know Himanshu, if you remember, they let KL Rahul have that single twice in the previous over also. मतलब they wanted Kohli on the strike at that या end specifically. So एंड mid on हटा दिया था, single दे दिया एक. you don't play that shot on this pitch. On a fast pitch, when there's consistent bounce, you get your bat at whatever angle you want. In this pitch, when you don't know एक बॉल आ रहा है एक बॉल स्लो रह रहा है 45 डिग्री पे जब बैट आता है इनसाइड एज स्टंप पे आता है. इवन इफ यू सी उनके दो प्लेयर्स का सेम लगा था. दे वर लकी, मिचेल मार्श एंड That's ट्रेविस right. एट बोथ. दोनों Like, को my question here is why did India misread? In a way, you can't say they misread the pitch, but this is their home ground. This is the pitch that they play IPLs on as well. Yeah, I think So sometimes what happens is that the thing which has always worked with Rohit Sharma, even in IPL, even in international cricket, is he's highly reliant on data. He's someone who like मतलब जो डेटा एनालिस्ट टीम है इंडियन क्रिकेट टीम की उनके पास पहले 3 एनालिस्ट होते थे अब 6 एनालिस्ट हैं.
रोहित शर्मा ने अपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट मुंबई इंडियंस से 3 एनालिस्ट और लाए एंड ही रिलाइज टू मच ऑन डेटा एंड इट वर्क्स इन हिज फेवर। मतलब अगर आप कैलकुलेटेड डिसीजंस देखोगे, वो इंस्टिंक्टिव से ज्यादा वो बहुत स्टडी करता है अपने प्लान्स के बारे में। आज But भी this उसने time वही it किया। didn't. It didn't. This time it backfired. Yeah, it backfired big time, क्योंकि there is a reason why they always say, right, captaincy is a skill which is not taught. You either learn it on your own or you don't have it. वो अच्छा कैप्टन है, but just that it didn't work out आज. All his decisions backfired. जैसे हिमांशु ने बोला जडेजा को लाना against मार्नस, and I looked at it and I was like, this is not a pitch for Jadeja. Why Jadeja? उसने दूसरे एंड से ट्रेविस हेड के लिए उसने एंड चेंज करवाया कुलदीप का, एक ओवर डलवाया जडेजा से, एक सिराज से डलवाया, एंड चेंज करने के लिए कुलदीप को डाला। एंड आई वाज लाइक, नहीं भाई, नहीं होने वाला अभी ये एंड से, पेसर कंटिन्यू रखो। बट लास्ट क्वेश्चन बिफोर, मतलब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये, do you think India today genuinely missed Hardik Pandya and this is the reason why Hardik Pandya was playing all throughout the Definitely. World Cup? Everyone said. Definitely. That's right. Like Definitely. we were lucky we did not missed him in much early games because our this top pitch is order. tailor-made for Hardik Pandya. Hardik Pandya Yeah. loves this kind of a pitch. No, Or even if Definitely, it wasn't, man, we would have scored like a 280 if he would have been there, and he would have bowled a couple of short pitch balls with the power, with the he would have made it. I tell you, the big impact. It gives you an But we extra, missed him anyway. Look, bowling we option. cannot say like he was not there and we were not able to beat Australia. We were able to with this team, but जैसे आप Australia played It's better like cricket. आपका हमारा Travis नसीम said- शाह और आपका हार्दिक पांड्या ना। नहीं, मैं हार्दिक नहीं, पांड्या नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे तो क्योंकि- ये था भाई, हमारे तो एक चीज ये भी थी कि हार्दिक पांड्या का चोट लगना और ठाकुर भाई का बाहर बैठना अच्छी बात थी। क्या ठीक है? पता था हाँ, शायद एक ठाकुर मैं पांच इसलिए ले आपको जाता। कह रहा था क्योंकि है ना, मुझे याद है जब रोहित ये टीम बना रहे थे तो उनको पूछा गया था कि हार्दिक पांड्या क्यों इतना इंटीग्रल पार्ट है टीम का, तो रोहित ने बोला था कि जहां विकेट कुछ नहीं करती या बहुत टैकी है, मेरे गो टू प्लेयर हार्दिक पांड्या है, क्योंकि हार्दिक पांड्या is ready to bend his back and ready to bowl at 140 after his injury. He's bowled superbly. 140 and face to face man, हाँ, आंखों के सामने से निकालता वो बंदा। और जैसे आपको याद है पाकिस्तान वाले गेम में जब इमाम और आई थिंक अब्दुल्ला शफी की पार्टनरशिप लग रही थी, who did India turn to get the wicket? It was Hardik Pandya. And he bowled Okay. really well as well, yeah. Yeah, so it And was always Pakistan Hardik was Pandya flying who did the 150 job. 150 for 2 I think, and then they all out 190. Lekin guys, this team has brought you this far. So Yeah, of course. I mean, Man, we are proud. No doubt. I mean, given a chance, 45 days. Look, 45 days of being an Indian cricket fan, this has been like a golden period because जो गेम लग रहा था यार, ये 229 against और भाई- इंग्लैंड तो भाई खा ऐसी जाएगी। ऐसी टीम देखी नहीं पहले, ठीक है ना, हर बॉक्स टिक किया उन्होंने 44 days. So I On think the yeah, I 45th think, days, okay, that's a tough I slog. think it'd be tough to kind of criticize. Yes, there is points here and there, but I think as cricket fans, I think we should be really happy to see this team. No, definitely we are happy. Yeah. We are happy that we're just heartbroken. That's what I said. We are not Yeah, angry. exactly. We I are just think- heartbroken. Himanshu We are not called me, sad. okay? We are Himanshu not sad, called me we're in the just evening. heartbroken. Mujhe We would भाई be एक happy मिनट, लेकिन That's एक मिनट, understandable, guys. एक मिनट, Himanshu called me in the evening. I asked Himanshu कि Himanshu asked me क्या कर रहा, मैं बोला मैं हारते हुए देख रहा हूँ, बोला मेरे से नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा ही देख रहा हूँ सिर्फ। भाई मैंने भी 2 बार टीवी बंद करके बैठ गया, मैंने कहा बताना बाद में स्कोर क्या हुआ। मुझे फिर आपने डबल पार्टी बनाई। डैड का फोन आया इंडिया से, मैच नहीं देख रहे, मैंने कहा हार गए। वो आगे से मुझे बोले मुझे लगता है मैं भी देख के हटाऊं। ये पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही आदमी खुश है, वो है मीर वैस, उसी से पार्टी लेनी चाहिए, ठीक है। मीर वैस ने तो बोला भाई हम तो वर्ल्ड कप जीत कर निकल गए। मैंने कहा कैसे बोलता है जिसने हमने पाकिस्तान को हराया था। मैंने कहा नहीं यार ऐसा मत बोल। बट ठीक है, आई थिंक एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं तो बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि ऐसी वर्ल्ड कप, मतलब ऐसी ओडीआई टीम तो देखी ही नहीं जो इतनी डोमिनेट करे, क्योंकि एज मैं किसी को तो मैं बोल रहा था, मैं 90s का बच्चा हूं, तो एक मिनट पाजी, मैं 90s का बच्चा, तो मेरे लिए फास्ट बॉलिंग यानी 125 130, मैंने इसके आगे पेसर इंडिया के नहीं देखे थे। आज एक ऐसा पेस बैटरी है इंडिया का जो बोलने की, मतलब जहां मरी हुई विकेट पे जो 140 पे डाल सकती है, दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स है जो पेस अच्छा खेल सकती है, उनको पेस से शेयर पेस। प्रशांत भाई ये तीन लड़के नहीं, इनके पीछे जो 15 लड़के और बैठे हुए हैं उनकी बात भी करो। हाँ, मतलब इंडिया प्रोड्यूसिंग एंड प्रोड्यूस्ड नाउ until now
the very good pace battery. Okay, I think the अच्छा system that अटैक you है, guys अभी और लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। और मुझे जितने ये भी हम लोग बताओ मैच जीतते थे ना, मुझे हम मुझे ये जितने भी बताओ आप सॉरी सॉरी ऐसे मुझे भाई, लास्ट चीज बोलूंगा, जितने भी मैच पहले हम लोग जीते थे ना, बैटिंग पे जीते थे, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में हमने जितने मैच जीते हैं ना, सारी टीम्स को ऑल आउट किया। आज एक स्टैट मैंने पढ़ा, पूरे वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में कोई बॉलिंग यूनिट ने 90 विकेट नहीं लिया है। इंडियन बॉलिंग हाँ यूनिट ने 97 विकेट्स लिया है। ने, उसके पहले बेस्ट वाज ऑस्ट्रेलिया विच वाज 86, और फिर वेस्ट हाँ इंडीज जो फोर फास्ट बॉलर्स थे 88 विकेट्स। इस बॉलिंग हाँ। मतलब 97 विकेट्स इन द वर्ल्ड कप, सिर्फ पेसर्स, और मतलब दैट्स वो सम भी ऐसे इनसेन वर्ल्ड अमाउंट कप ऑफ में विकेट। जहां पर सबसे ज्यादा छक्के लगे, सबसे ज्यादा रन बने, सबसे ज्यादा फोर लगे, और सबसे ज्यादा टीम्स हाईएस्ट रन भी लगे, ठीक है ना। वहां पर इंडियन बॉलर्स ने विकेट लिए। और ये इसीलिए बोल रहा हूं कि हमें ए, इतनी खुशी दी है इस टीम ने, कि एक दिन बुरा खेलने से हम लोग दुखी नहीं है, हार्ट ब्रोकन है। अरे तो खुश हो अच्छा जा होता गुरजीत, अगर बस हो ट्रॉफी गया हमारे पास रहती। गुरजीत हो गया, आगे बढ़ो, हो गया, खत्म नहीं हो गया मैच, हो एक गया, चीज मैं बोलना मूव ऑन। चाहूंगा, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स ऑल गुड ऑल सेट, बट what makes a difference between a player and a champion is what Australia has shown us. या जो yes. या दैट्स जो राइट। जो स्टैट नहीं बनता है वो है नर्व्स कौन हैंडल करता है। इंडिया ने नर्व्स हैंडल नहीं किए, वो आज नहीं, ऑस्ट्रेलिया 10 किए। साल से चल रहा है ये नॉकआउट नहीं स्टेजेस पर में, इंडिया इज बीन गेटिंग आउट। एक मैं आपको, और ये नर्व्स दिखती नहीं कहीं ना, पर मैं इस मैच में दिखा बताता हूँ कहाँ दिखी। मिचेल मार्श जब आउट हुआ, आपने देखा उसकी रिएक्शन क्या थी? हंस के गया ना। हंस के कोहली Oh, को wing उसने मारी आंख उसे, मार के गई है, राहुल को आंख विंग मारी मारी उसने। उसने। हाँ, आंख मार के गया। तो सोचो उसका मेंटालिटी और टीम का मेंटालिटी क्या होगा, जो उनका वन डाउन प्लेयर इज द वन हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द एंटायर 11। वो आउट होने के बाद, इन ऑन हिज मिस्टेक, बॉल ऐसे नहीं कि स्विंग हुआ कुछ नहीं, इनसाइड अंडर द बैट लग के गया है, उसके बाद वो आंख मार के गया। तो सोचो उनकी मेंटालिटी क्या होगी। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेयर एंड अ चैंपियन हु होल्ड्स हिज नर्व्स, ही विल गेट अक्रॉस। That's the confidence it gives you, right? हमारा जो होता है ना, for example, we'll give you our example. हमारा जो होता है ना player, yes, they do get backing, लेकिन वो उन्हें हर वक्त टेंशन होती है, मैं कभी भी टीम से बाहर हो ये जाऊं, बिलाल भाई कभी के भी। पॉइंट पे ऐड करने के लिए ना, मैं नाम लेता हूँ Listen मार्नस that, लैबुशेन का, क्योंकि सब बोल Prashant, रहे थे हेड listen आने के that. बाद मार्नस बाहर जाएगा, बट Travis, मार्नस को चांस दिया। Travis Head, Travis Head was injured. या लेकिन they believed in the player that he will win us the games, and they brought him back. He was injured. They brought him back, and they दे said, "No, ब्रॉट हिम बैक आफ्टर no." 6 गेम्स, ही डिड नॉट प्ले फॉर 6 गेम्स। तो Look अब at आप that. एक बात That's है, the भाई confidence you need उस to बंदे show. ने जो मैं सेमीफाइनल और फाइनल दोनों बड़ी गेम जिताई उनको। और वर्ल्ड कप, That's the वो difference. टेस्ट Exactly the चैंपियनशिप। point. That's a good point. जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस मैच ने हमें एक और चीज ये भी सिखाई कि जो कल्चर स्पेशली इधर हमारे इंडिया पाकिस्तान में प्रेशर का कल्चर है, और जो कल्चर ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, भले वो एक लीग स्टेज में हो या फाइनल स्टेज में हो, पर उस लेवल का प्रेशर नहीं लेते, उस लेवल की स्ट्रेस नहीं लेते जितने हमारे प्लेयर लेते हैं। वो अपना नॉर्मली एक अच्छी क्रिकेट खेलने आते हैं, खेल के चले आते हैं, लेकिन और फिर हमारा असद भाई ये भी है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स, मसलन हमारा सिर्फ क्रिकेट है। हमारा इधर पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही है ना, बस हम क्रिकेट ही देखते हैं, और स्पोर्ट्स तो बाकी ऑलमोस्ट देयर ओवर। ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा और स्पोर्ट्स खेलते हैं, सो दे टेक इट एज अनदर स्पोर्ट एंड दे प्लेइंग इट, प्लस दे that आर is देयर why they ऑन are very मैरिज एज वेल। successful, and this is exactly they are very successful. They play sports as an sports, we play sports as an emotion and religion and whatever, everything हमारी associated होती है, whereas they play as a sports, and that's why they don't go that far, इसलिए उनका focus और commitment better है on एक और है कि यहाँ पे मुझे अच्छा फील हो रहा है कि इंडिया का जो सिस्टम है ना बना हुआ, वी टॉक्ड अबाउट हाउ दे प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स, आई थिंक दैट्स रियली गुड। They worked so hard to bring this sort of environment and system in place that has brought them success. I know you lost today in a final. Taking the system that you have will give you success in the future. Where Pakistan needs to learn from Australia, India is that they need to have But a today similar. was a success. Today was a success. The only difference is they don't have a trophy, but they were successful. They were in the final. Apparently, they But were this the is best. saying they may not have the Successful. trophy, but the team that they have and the result that they're producing is just not the team, it's the whole environment and the system they have in the background as well. Correct. मतलब just to add to your point, Ali and Asad bhai and Bilal, right? India has got a system not only for players but also for coaches. So we already Yeah. have earmarked 3 coaches who are going to come into this team. For example, Rahul Dravid's contract will end of this month.
So mostly the next coach will be VVS Lakshman, who's already been coaching with the India under 19 and A team, and so on and so forth. Like, Rahul Dravid followed the same process, Yeah. didn't he? So most Indian coaches who's come from last 3 batches, right? They all have been coaching under 19 A team. Before Rahul Dravid, we had Duncan Fletcher. डंकन फ्लेचर को भी 3 महीने के लिए तो भेजा था. रवि शास्त्री टीम डायरेक्टर थे, बट वो तो अलग जोन में है, उनको अच्छा, नहीं मेरे को ये बताइए, इस मेजर मेगा इवेंट के बाद हमारे कौन से ऐसे प्लेयर होंगे इंडियन टीम के खास तौर पे कि जो अब हम बाद में ऐसे मेगा इवेंट में नहीं देखेंगे? If you see the World Cup, next one, if they happen, the one day World Cup, next is I Champions. think might be with some changes will happen. Definitely. Champions Trophy. I don't think so. We will see the Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul. I think KL Rahul will be there. KL Rahul will be the captain next World Cup. KL Rahul or Hardik Pandya. You think KL Rahul is a 33? It will be stupid if you drop KL Rahul. You will never get a keeper batsman like him. KL Rahul is not 33. Virat Kohli is 33. Like not the World Cup, guys. Champions Trophy is 2025. Who will be there? Oh, in 2020, Virat definitely play. Rohit will play. Champions Trophy तो यही स्क्वाड होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. मेरे हिसाब से एक ही चेंज होगा. Only Rishabh Pant will be back. Pant will be back in the team. Hardik will be back, and then what? And Hardik Pandya will be back. In all honesty, right? I think the only change in this Indian team, which will most likely happen, is Surya Kumar Yadav will go. I think they have given him the rope little too much for ODIs. He's a great T20 batsman, but ODIs it hasn't worked for him. So they will probably change. Another thing. पंत भी वापसी आना है. हाँ, पंत वापसी आना है. और दूसरा प्लेयर जो मेरे हिसाब से शायद ना खेले चैंपियंस ट्रॉफी इज मोहम्मद शामी. ठीक है, मोहम्मद शामी इज ऑलरेडी 33. He's got 2 back surgeries पहले ही हुआ है उनका. ठीक है, तो I don't know how long will he be fit, क्योंकि जब लास्ट IPL भी खेला था. He might be stick only for the 2020 if he wants. Correct. He'll choose one format, 1 or 2, because IPL में भी he had to sit down 2-3 games because he had an issue at his back. ठीक है, the kind of bowler he is, so or the best for him, I feel that play Test cricket and IPL. That's it. छोड़ दो one day छोड़ दो और normal 2020 छोड़ दो. Just play for Test match for India and also बिलाल भाई ना. और ऑनेस्टली आपको बोलूं, इंडिया के करंट 45 प्लेयर्स का एक बैच है. 45 नॉट 1 और 2, 45 प्लेयर्स के बैच है, जिसमें से ये बार 15 को गिन भी नहीं रहा. 45 प्लेयर्स के बैच है पिछले 18 महीने में इंडिया ने जिनको चांस दिया फॉर फ्यूचर. फॉर एग्जांपल समवन लाइक ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल. ठीक है, देयर इज रिंकू सिंह हु इज कमिंग इन T20 सर्किट, प्रसिद्ध कृष्णा जो रिप्लेसमेंट प्लेयर आए थे वर्ल्ड कप में. इंडिया के पास एक 45 प्लेयर्स का एक बैच जो ऑलरेडी वो लोग जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब छांट के रखे हुए हैं. इनको पता है कि ये 45 में से ही मेरे अगले 2 इवेंट के लिए आएंगे. जैसे एक T20 के लिए एक अलग टीम बना रहे हैं साइड बाय साइड, जिसका कैप्टन हार्दिक पांड्या है. और हार्दिक पांड्या जिस टीम का कैप्टन है वो टीम बहुत फ्लैम्बॉयंट है. फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेलती है, यहाँ पे भी वो फ्लैम्बॉयंट ही खेलने वाले. वो पहले बॉल से मारेंगे, वहां पे कोई रुक के नहीं खेलने वाला. वहां वो 20 ओवर पूरा खेल भी ना ले, 18 ओवर खेलेंगे, 300 मारेंगे, आ जाएंगे वापस. ठीक है, तो वो उस टाइप का प्लेयर वो ढूंढ रहा है और वो बना भी रहा है वैसे टीम. और इंडियन मैनेजमेंट हैज गिवन हिम दैट फ्रीडम that just go for it. And the next year is the 2020 World Cup, isn't it, in America? I really don't care about the T20 World Cup. The difference between the 50 over World Cup and T20 World Cup is the 50 over World Cup comes in once in 4 years, and उसका importance है. हर साल अगर आप World Cup करते रहो. हिमांशु तो एक वर्ड बोल रहा है, 50 और वर्ल्ड कप में एक चीज टेस्ट होता है जो T20 में कभी नहीं होता, वो है टेम्परामेंट. ये सब सही है, पर अगर आपका वर्ल्ड कप हर साल होते गया ना, you lose the importance of the World Cup. 2 साल, I think World Cup should be in once in every 4 years. T20 has lost that importance because now last year there was a T20 World Cup. उसके पहले last year there was a T20 World Cup. I know because COVID. वो एक बार तो ऐसा हुआ ना कि वो कोविड की वजह से. हाँ, सॉरी मेलबर्न वाला. हाँ सॉरी, लास्ट ईयर था वो. कोविड की वजह से भी वो एक इकट्ठे हो गए ना 2 वर्ल्ड कप. मैं सोच रहा 2 साल पहले था, मैं कब से वही सोच रहा. 2 साल वो लगातार वो हुआ ना 20-21 में. वर्ल्ड कप के अलावा भी अब क्रिकेट इतनी हो गई है कि अभी आपके टूर्स आ जाएंगे, फिर T20 का वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, IPL. आपको मैं एक जोक बोलता हूँ असद भाई, एक जोक है. इंडिया का IPL सीजन जब चालू हो रहा है ना, उसके 1 वीक के बाद एशेस खत्म हो रहा है
अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करती है 2 वीक के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसी के बीच में उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मतलब द इंडियन क्रिकेटर स्केड्यूल इज पैक्ड. So I was reading somewhere, it is like crazy. They're going to play like and I think 52 matches in less than six months. And just to I mean, extend just not the the point, Indian team, by the way. Rahul जो Ganguly तुम was पॉइंट saying. बता रहे हो प्रशांत, मुझे याद है जो इंडिया ने लास्ट अपना अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, उसमें भी लड़के सारे आईपीएल से होके आए थे. They didn't really have time to prepare for that. वहां पे भी एक ही चीज हुआ है, वहां पे भी एक ही चीज हुआ है. ये ट्रेविस हेड नाम का जो प्लेयर है ना, वहां पे भी साले ने सेंचुरी मारा है 170 बॉल में. तो मारी थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन टीम को बिल्कुल मौका नहीं मिला प्रिपरेशन का. वो आईपीएल में इतना एंगेज थे, वहां कमर्शियली इतने हाई स्टेक हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली खेलने आएगा अपना टेस्ट चैंपियनशिप. They didn't really have time. They need to manage the expectation. उस टाइम मतलब फर्क इतना था, उस टाइम ट्रेविस हेड क्लीन शेवन था, आज मूछें और दाढ़ी बढ़ा के तो भी सेंचुरी तो मार के ही चला गया. ट्रेविस हेड ऐसा प्लेयर है ना कि लगता है कि अब देगा विकेट और 150 रन ऐसे ही बना लेता है वो. हाँ, मतलब टेस्ट में भी वही है ना. आज वो रिकी पॉन्टिंग वही बोल रहा था ना, उसका टेक्निक, जब वो लोअर प्लेयर था तो सब बोल रहे थे टेक्निक बहुत घटिया है, ये सर्वाइव नहीं करेगा टेस्ट क्रिकेट. और जब से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से वो आया है, सबसे ज्यादा नॉट आउट उसी के है, क्योंकि वो इतना डिटरमाइंड है, विकेट नहीं देने पे नहीं आउट कर सकते तुम जब तक वो डिसाइड नहीं करता. नहीं. आज जो हेड है वो रात को जो है ना गुरजीत के हेड में आएगा. Okay, coming back to this point. मैं शास्त्री भाई बड़े भाई को मैं फॉलो करता हूँ, कभी-कभी नींद अच्छी आ जाती है. Coming back to the point that Himanshu mentioned about this winning mentality. Cummins gave in the interview, he was talking about how everybody minus and played the best for the last. He came to Travis Head. He's like, that's just the way he plays. That shows that he knows. He knows he doesn't want to change the player. He knows what the player offers, and he gives them the freedom. So this year in Ashes, right? So they were, I think 100 for 4 or 100 for 5. Travis Head came, stuck for an hour. After that 1 hour, Travis Head said, बहुत हो गया, अब मैं टेप बॉल वाली क्रिकेट खेलूंगा. उसने अपना दुकान खोल दिया और इंग्लैंड बैकफुट पे चला गया. ट्रेविस हेड वैसे ही प्लेयर. ऑस्ट्रेलिया में इतने खेलते नहीं है, वरना वहां पे भी we have a player like him and he's Rishabh Pant and we missed him this time. Rishabh Pant he'll come, but look, he needs to have another 10 players surrounding him, and this was a perfect, and the reason why I'm more heartbroken is because this team was more than perfect. Like, उसको क्या पेस, क्या स्पिन, उसने डिसाइड किया मारना है, तुम कहीं पे भी डालो वो मारने ही वाला है, कुछ भी कर लो. वो हो गया और हार्दिक पांड्या दोनों को मिस किया इस वर्ल्ड कप में लास्ट गेम में. ठीक है, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ वही है कि इट्स बीन एन एंजॉयबल जर्नी. इट्स बीन प्रॉब्ली वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट वर्ल्ड कप व्हिच आई हैव सीन इन ऑल दिस इयर्स. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो दुख है कि हार गए, एंड 2003 वाला सेम सीन हो गया, बट नो डाउट 2003 के बाद तो काफी रोया था मैं, बट आज इतना रोना नहीं आया क्योंकि दिखा they gave their best, they played their hearts out. Apart from I today. don't think so, Prashant. Apart from today, मैंने बोला apart from today. Surprising, like you didn't think that any team in this World Cup would beat India the way they were playing. I didn't even think, but I was sure, like I told you in semi-final, right? There is only one team which I don't want to face, that's Australia. You would beat them. They give them challenge. I didn't think they would beat them the way they were playing. No, I knew if they I don't know if you follow football. There is a club called as Real Madrid, and there is a very popular saying: if Real Madrid make it to the final, write the name of runners-up on the trophy, because they are only going to win it. They have never lost a final in all their lives. So Australia is that team. If you give them a yard, if you give them an inch, they'll take a yard. India gave them an inch. They took the entire trophy and are going back to Australia. If you imagine, कोई बोलेगा वार्नर ने क्या किया, स्कोर बोर्ड देखेगा. If someone has not seen the match, वार्नर 4 रन 5 रन, but then you see the amount of runs he saved in the field. So they just try and find ways of contributing. But मेरे हिसाब से ना हिमांशु, ये ऑस्ट्रेलिया टीम है ना, क्या करनी चाहिए ना, सबसे पहले ना वो उनके ड्रेसिंग रूम में जाके ग्लेन मैक्सवेल का पैर पकड़ के थैंक यू बोलना चाहिए. उसके वो एक इनिंग ने ना उनको आज वर्ल्ड कप में बचा के रखा. They actually believed that they could lift the World Cup is because of that cramped man. Because you remember आज Aaron Finch बता रहा था कि after that knock ना, he came into the dressing room and all he said was, my job is not done, I want to lift the trophy. That statement, right? Every Australian player looked at it and said, now he wants to win it, and he played it as if he wants to win this, right? So we'll go and win it for him now. It started from there, and that belief just changed overnight.
बट ठीक है यार, खत्म हो गया वर्ल्ड कप अब। चलो हाँ, कोई कोई नहीं बात guys, नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है अगली बार आएगा, फिर आएगा, फिर नेक्स्ट फिर टाइम। आएगा, फिर देखेंगे, फिर नॉकआउट जाएंगे। 10 साल से मैं यही देख रहा हूँ, सेमीफाइनल सेमीफाइनल फाइनल अरे हो सेमीफाइनल। गया यार, हो गया, बस हो गया, ठीक हो है। गया। Guys played well. It's okay, part of the game. हाँ, They मुझे अभी Guys, I पिंकी think भाई का डायलॉग याद आया, मैं बॉयज क्रीज के प्लेड बाहर वेल। हूँ तो भी आउट हूँ, अंदर गया तो भी मैं आउट हूँ, मैं करूँ, मुझे तो रूल समझ में ही नहीं आ रहा। बोलता करना क्या है, मैं बोलता है रोकूं आउट, ना रोकूं तब भी आउट। अब वो इंडिया का वही हालत हो गया, अटैकिंग क्रिकेट खेलो तो भी हार गए बेचारे, डिफेंसिव क्रिकेट खेलो तो भी हार गए। अब पता नहीं तो अब भी हार इंडियन। गए। but I think for me the last point is the future is very bright. That the way they have been planning and they have been showing, I think the future is very bright. So you don't have to worry about it. Just it will come. It's just a matter of time. Yeah, hopefully. Uh, Anyways guys, thank you. आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग। 1 घंटा और 11 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। गाइस, थैंक यू वेरी मच whoever watching us. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लीव योर कमेंट। आपको पहले भी बोला है कि हम लोग नए लड़के हैं, हमसे गलतियां भी होंगी। तुम अगर कहाँ से नए गलती हो हुई है, हाँ, तुम कहाँ से नए हो भाई? ओ भाई, ये भाई तो 1994 का वर्ल्ड कप भी देख रहा था। वो वो भी देखा है, 87 का भी देखा है, 92 का भी देखा है। So guys, apart from the jokes, thank you very much. Hopefully we will catch you soon. There's a more cricket is coming. Definitely we're gonna come back with some bang bang more cricket and more shows. See you guys. Thank you very much. Thank you. All the Himanshu best. bhai, thank you. Asad bhai, thank you. Prashant bhai, thank you. Bilal bhai, thank you. Thank you No guys. problem. We love Thank you. you. All Take the care. best. Bye bye. Guys, bye bye. Cheers, bye bye. Bye bye. Bye.